Good morning, dear students. Welcome to our English class. Today we will be revising about Taro's Reward, that is Unit 3, Lesson 1, Taro's Reward. We have already completed it, but now I'll be reading and explaining you paragraph wise. Fine. As you all know, Taro was a young woodcutter. He was a very hard-working child, right? So what he actually wanted to give everything whatever his parents wanted. He was hardworking, but he was very poor. He was not able to earn good amount of money to fulfill his parents needs, but he wanted to earn good money and give his parents whatever they asked for. So now we will study the story. Okay, I'll read paragraph wise and explain. Before you read, this is a story about a thoughtful and a loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. So, what happens? He works hard for fulfilling his parents' wishes and then he gets some unexpected help. What is the unexpected help? That we are going to learn. Okay, paragraph 1, Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. What is said over here? That Taro was a young woodcutter. He chopped woods in the forest and he lived with his father and mother on a lonely hillside. Okay, and what happened? He is working very hard, but he is earning a very little amount of money. Chopped means cut into pieces. You can see beside there is a meaning written over there. Okay, this made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. Okay, so he was a very thoughtful son, he was a very good son. He wanted his parents' wishes to be fulfilled. So he was very sad because he was unable to earn a good amount of money. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. So, what is it in the second paragraph? That one evening they were sitting in the hut. The hut was having cracks. Okay, it was having cracks. So when the cold wind blew, the wind also came inside the hut and everyone started feeling very cold. So his father said, काश मेरे पास एक साके का कप होता, I could have drank it and then it would do me all good. Okay, this made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. So, what happened next? ही फेल्ट वेरी सैड कि मेरे पापा को एक कप साके चाहिए, मैं वो भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि साके तो बहुत महंगा आता है. अब मैं क्या करूँ और पैसे कैसे कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ एंड देन ही सेड लाइक आई विल वर्क हार्डर देन बिफोर. मैं जितना काम करता हूँ उससे ज़्यादा काम करूँगा. Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. So, what is said over here? That next morning he woke up very early and he went to the forest and he started chopping the wood, cutting the wood. But he continued that and the sun climbed up and it was very warm. So he has to remove his jacket. उसको अपना jacket भी remove करना पड़ा क्योंकि उसको बहुत सारा पसीना आ गया. His mouth was dry and his face was wet with sweat. पसीने से पूरा गीला हो गया और फिर सोचने लगा काश मेरे पुअर फादर भी ये गर्मी महसूस कर सकते. And then he again started to chop.
And with that, he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy sake to warm the old man's bone. So, what happened then? जैसे ही उसे अपने पापा का ख्याल आया, उसने और फास्टर और हार्डर चॉपिंग शुरू कर दी। उसने सोचा कि एक्स्ट्रा मनी कुछ मिलेगा तो एक कप साके तो मैं ख़रीद ही लूँगा मेरे पापा के लिए, ठीक है। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड? फिर अचानक से तारो ने चॉपिंग स्टॉप कर दी। उसको कुछ आवाज़ आई, बराबर। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर? तो उसको पानी बहने की आवाज़ आई। तो उसको ऐसा लगा कि सच में इस एरिया में तो मैं कितनी बार आया हूँ, बट मुझे तो कभी भी पानी की आवाज़ नहीं आई, तो आज अचानक पानी की आवाज़ कैसे आ रही है? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty, the axe dropped out of his hands, and he ran in the direction of the sound. Okay, so what happened? Taro ran in the direction of the sound of water because he was thinking like मैंने तो कभी सुना ही नहीं यहाँ पे पानी का आवाज़, तो पानी कहाँ से आ रहा है, चलो देखने जाते हैं. So he ran very fastly. वैसे भी he was very thirsty. Yes, so he ran there and the axe means जो कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी वो भी नीचे गिर गई and he ran in the direction of the sound. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. दिस वॉज द अनएक्सपेक्टेड हेल्प गिवन बाय द नेचर. वो अपने मम्मी पापा के लिए साके लेना चाहता था, मेहनत कर रहा था, तो अचानक उसको पानी की आवाज़ आई. गया, पानी पिया, तो उसको पता चला कि अरे ये तो पानी नहीं है, ये तो साके है. सच में साके है क्या? तो बार बार उसने अपने हाथों में पानी भरा और पिया, और जब भी टेस्ट किया उसको पता चला कि ये तो साके है. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. तो फिर उसके पास में एक मिट्टी का छोटा घड़ा था. वो छोटा सा मिट्टी का घड़ा जो उसके पास था, पिचर, वो उसने भरा और वो फटाफट घर पे भागा. साके देखकर उसके पापा बहुत खुश हुए. Then what happened? Only one swallow of the liquid he stopped shivering and he did a little dance in the middle of the floor. तो जब उसके पापा ने सिर्फ एक घुट साके पिया तो वो इतने खुश हो गए कि वो रूम में डांस करने लगे और उनकी बॉडी में अच्छे से गर्मी आ गई. उन्हें ठंड लग रही थी तो वो शिवर करने का भी बंद कर दिया. That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking him for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the village. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसी आफ्टरनून कोई मम्मी पापा से मिलने के लिए आया. तो तारो के पापा तो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने एक कप ऑफ साके भर के वो लेडी को दिया जो उनको मिलने आई थी. लेडी ने थैंक यू बोला और फटाफट एकदम लालची आँखों से देखा कप को कि ये तो साके है और फटाफट पी लिया. उसके बाद में तारो ने भी स्टोरी सुनाई कि मैं वहाँ गया था, मैजिक वाटरफॉल है, वो तो पानी नहीं देता है, वो साके देता है, मैं वहीं से लेके आया हूँ. तो थैंक यू बोल के वो लेडी फटाफट वहाँ से निकल गई. एंड देन व्हाट डिड शी डू? शी हैड स्प्रेड द होल स्टोरी थ्रू इन द विलेज. बराबर, तो पूरे विलेज में उसने ये स्टोरी फैला दी. दैट इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स to the woodcutter's house. Each man heard of the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. So what is said in the 9th paragraph? कि शाम को तो इतने सारे लोग मिलने आए वुडकटर के घर पे कि देखो नहीं. और फिर उसके बाद में सबने स्टोरी सुनी और सब लोग एक एक सिप साके का पीने लगे और फिर 1 घंटे के अंदर तो पूरा पिक्चर खाली हो गया. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find
to hold the magic sake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no sake, only cold water. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मॉर्निंग तारो उठा और जल्दी और गया, बहुत बड़ा पिक्चर लेके गया कि भाई चलो पापा के लिए साके लेके आऊँगा। जब वो वहाँ गया तो उसने क्या देखा कि नेबर्स और जितने भी विलेज के लोग हैं सब लोगों ने जार बकेट पीचर जो भी उनके हाथ में आता था वो सब कुछ लेके साके कलेक्ट करने के लिए लाइन में खड़े हो गए। फिर उसमें से एक आदमी ने क्या किया? He drank a little water and then he shouted, "Arey, this is water, it's not sake, it's just cold water." "We have been tricked," shouted the villagers. "Where is Taro? Let us drown him in this waterfall." But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going on. He was nowhere to be found. ओके तो क्या हुआ? जैसे ही लोगों को पता चला कि ये तो पानी है साके नहीं है तो सब लोग चिल्लाने लगे, कहाँ है तारो? उसने हमें उल्लू बनाया है, ही हैज़ ट्रिक्ड अस, उसको पकड़ो और इसी वाटरफॉल में डुबा के ख़त्म कर दो। लेकिन तारो भी बड़ा होशियार था, वो एक रॉक के पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा था, देख रहा था कि क्या हो रहा है। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it in his lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave delicious sake, and to everyone, it gave just cold water. तो व्हाट हैपेंड देन? सब लोग मटरिंग करके चले गए, मतलब अपना गुस्सा निकाल के चले गए। जैसे ही विलेजर्स चले गए तो तारू वहाँ से छुपके निकला और फिर जाके वाटरफॉल में से उसने पानी चखा। बोला यार पानी तो नहीं है, मुझे तो साके ही लग रहा है। फिर से चखा तो पता चला कि ये तो साके ही है। एंड देन ही थॉट कि हाँ ये मैजिक वाटरफॉल सिर्फ मुझे ही साके देता है, बाकी सबको ठंडा पानी देता है। पर ऐसा क्यों? बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल सन। वो अपने लिए तो नहीं ले जा रहा था, अपने मम्मी पापा के लिए लेके जा रहा था, है ना। और विलेजर्स तो सब लालची थे, वो तो अपने लिए लेके जा रहे थे, इसीलिए मैजिक वाटरफॉल ने उनको खाली पानी दिया और तारो को साके दिया। ठीक है, तो तारो वॉज अ थॉटफुल सन एंड ही विश्ड टू गिव हिज पेरेंट्स वॉट एवर दे वॉन्टेड। दैट्स वाई द वाटरफॉल गेव देम साके एंड टू अदर विलेजर्स इट गेव ओनली cold water. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so kind and good. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. So, what happened then? ये सारी कहानी, स्टोरी, इंसिडेंट जापान के एम्परर तक पहुंच गया और फिर उन्होंने तारो को बुलाया और उसे अवार्ड भी दिया। कितना अवार्ड दिया? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर बीइंग सो काइंड एंड गुड। एंड देन उन्होंने जो फाउंटेन था, सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था सिटी का, उसको नाम दिया गया तारोज फाउंटेन। एंड देन द एम्परर डिड दिस इन ऑर्डर टू एंकरेज ऑल द चिल्ड्रन। सारे बच्चे अपने मम्मी पापा का इस तरीके से ध्यान रखें, उनका हॉनर करे, उनको ओबे करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, इसलिए एम्परर ने ऐसा किया। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज द स्टोरी ऑफ तारो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू ऑल वेरी सून.